So, hello dear students. Now, the today's topic of discussion is the three-phase AC regulators. Okay. So, before that we had discussed the dynamic voltage restorer. Okay. So, in the last class we had discussed the overall design of the dynamic voltage restorer. Okay. That what are the parameters it contains, that is ratings of the load and power factor, the voltage rating of the distribution line, the maximum single phase sag, okay, three phase sag, duration of voltage sag. So everything about DVR, dynamic voltage restorer, we have discussed. Now the today's topic is three phase AC regulators. Okay, so what purpose AC regulators are used? As the name suggests, it is used to regulate the voltage. Okay, so it is, if it is a three phase AC regulator, so obviously it contains many types of circuits, okay, used for the three phase AC regulators. So AC to AC voltage converters means, AC regulators means basically we can say AC to AC voltage converters. Okay, so ये थ्री फेज एसी रेगुलेटर का क्या मतलब है? आप इनपुट भी एसी दे रहे हैं, आप आउटपुट भी एसी ले रहे हैं. ओके, बट बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, इन बिटवीन दैट यू कैन कंट्रोल द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इन ईच फेज. ओके, so that's why we call it controller or converter. So AC to AC voltage converters are your regulators. Okay, so the three phase loads are connected in star or in delta, that you will see in the diagram. Okay, so थ्री फेज लोड्स जो है वो बैलेंस्ड मैनर में या तो स्टार या डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में इसमें कनेक्टेड रहता है. नाउ इन ईच फेज, ओके, टू थायरिस्टर्स आर कनेक्टेड बैक टू बैक और अ ट्रैक. ओके, सो दो एंटी पैरेलल थायरिस्टर्स जो हैं वो एक हर एक फेज में कनेक्टेड होते हैं. ओके, या फिर ट्रैक यूज होता है. So two circuits are first taken up, both with balanced resistive load. Okay, so let us discuss the three phase three wire AC regulator with balanced resistive load. Okay, so कौन सा कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर रहे हैं अभी? सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन है थ्री फेज थ्री वायर. ओके, AC regulator with balanced resistive load. So the circuit of three phase three wire AC regulator, which is also termed as AC to AC voltage converter with balanced resistive load, is shown in figure. Okay. And it may be noted that the resistance connected in all the three phases are equal. Okay, so it is a balanced. So balance का क्या मतलब हुआ? Balanced का मतलब ये हुआ कि जो हर एक फेज में जो रेजिस्टेंसेज हैं they are equal. Okay, तो थ्री फेज थ्री वायर एसी रेगुलेटर, जिसको कि हम एसी टू एसी वोल्टेज कन्वर्टर भी कहते हैं, उसके बैलेंस रेजिस्टिव स्टार कनेक्टेड लोड के साथ फिगर में शो किया गया है. एंड टू थायरिस्टर्स कनेक्टेड बैक टू बैक आर यूज्ड पर फेज. ओके, व्हाट आई टोल्ड यू दैट in each phase we have the two thyristors connected back to back. Okay, so in total 3 into 2, that is 6 thyristors are required. Okay, so you can see the circuit. What I told you, that we have the input AC voltage in all the three phases, we have the load, okay, star connected load, so you can see this, and in each phase we have the R, that is balanced load. Okay, now for regulating the voltage we have the one pair of anti-parallel thyristors connected in each phase. Okay, so in first phase you can see T1 and T4 as anti-parallel. Okay, phase A. T3 and T6 are anti-parallel connected in phase B, and T5 and T2 are connected in phase C as anti-parallel thyristors. Okay, now two thyristors are connected back to back. Okay, so total we need 6 thyristors. So in this configuration, how many thyristors are required? Total 6 thyristors. Okay, so as per the requirement, these thyristors are triggered, they are fired. Okay, and they are triggered to obtain the output. Okay, and balanced output we obtain. So thyristors are fired in sequence, starting from 1 in ascending order, with the angle between triggering of thyristors 1 and 2 being 60 degrees, since it is a balanced load. Okay, so at every 60 degree, because 60 degree interval multiplied by 6, we have 360 degrees. So whole in full cycle, in one cycle of 2 pi or 360 degree, each thyristors are
fired in ascending order, means first T1 is fired, okay, then you will have this circuit, then T2 will be fired, okay, then T3 will be fired, and T4 will be fired, okay. So in this way we get the triggering pulses to the thyristors in ascending order. So all the 6 thyristors are fired, okay, but with the interval of, or the angle between triggering of the thyristors is 60 degree, okay. So 1/6 of the time period of the complete cycle, because 6 thyristors are there, you need to fire it at a difference of 60 degree, okay. So in this way, one full cycle, okay, or one time period T, 1/6 of the time period T of the cycle. So time period is how much? For a complete cycle it is 360 degrees, so 1/6 of it means 60 degree, okay. And the line frequency is 50 hertz. लाइन फ्रीक्वेंसी जो है वो कितना है 50 हर्ट्ज है, ओके. सो अगर 50 हर्ट्ज लाइन फ्रीक्वेंसी है, सो टी इक्वल्स टू टाइम पीरियड इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है, और अगर यहाँ से कैलकुलेट करें तो इसका टाइम पीरियड कितना आएगा एक साइकिल का, 20 मिली सेकेंड आएगा. कैसे आएगा? 1 अपॉन 50 करेंगे, ओके. 1 अपॉन 50 कितना हुआ? 0.02 हुआ, ओके. और 0.02 को फिर आप मिली सेकेंड में अगर चेंज करेंगे तो यू विल गेट 20 मिली सेकेंड. So the thyristors are fired or triggered after a delay of alpha from the natural commutation point. Okay. So the thyristors are fired accordingly. Okay. So the line frequency 50 Hz. So time period is your 20 millisecond, and the thyristors are fired or triggered after a delay of alpha from the natural commutation point. Now let us see the three-phase delta connected AC regulator with balanced resistive load. Okay, so this is the delta connected AC regulator configuration. Okay, so in this, just see the circuit of three-phase delta connected AC regulator. Previous one was star connected configuration. Now this one is delta connected configuration. Okay, so everything is same. Okay, you have the resistive load, but here the anti-parallel arrangement of thyristors are in series with all the loads or in each phase. Okay, so this is the AC to AC voltage converter. Okay, in delta connected with balanced resistive load, because in every phase we have the R as resistance. So all the phases the resistance is equal, that is R. That's why we say it a balanced resistive load. क्योंकि हर फेज में क्या है, जो लोड है वो आर ही है, हर फेज में आर है और वो इक्वल है, इसलिए इसको बैलेंस्ड रेजिस्टिव लोड कहेंगे. सो दिस इज द अरेंजमेंट. ये कौन सा अरेंजमेंट है? थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड एसी रेगुलेटर, ओके, विद बैलेंस्ड रेजिस्टिव लोड. फाइन. So all the resistors are connected in all the three phases are equal, and the two thyristors connected back to back, they are anti-parallel to each other. See, it is connected in this direction, so this one, the opposite one is connected in opposite direction. So that's why we call it anti-parallel thyristors. Okay. So this anti-parallel thyristor arrangement is across each phase. Okay. So total how many thyristors are required? 6 thyristors are required to make this arrangement. Okay. Now we will have the comparison of different circuits used for the three phase AC regulators. Okay. So this one is your 3-wire delta load, because there is no neutral in this. Okay. And this is called the 4-wire star load. Okay. Because we have the three phases A, B and C, and this is your neutral. So this is some delta arrangement. Okay. And this is the star arrangement with neutral. And this one is the control in delta. So this is something different. Okay. So three configurations, basically different circuits used for three phase AC regulators we have to compare.
So the important points of comparison between the circuits are, in the two circuits, the individual phase controllers control their own loads independent of the other. Okay. So दोनों लोड को कंट्रोल करने के लिए उसके इंडिविजुअल फेज कंट्रोलर्स हैं. ओके, सो दे आर नॉट कंबाइंड, दे आर इंडिविजुअल एंड दे कैन बी स्टडीड एज 3 सिंगल फेज कंट्रोलर्स. ओके, जैसा कि पहले भी डिस्कस किया था कि उनको इंडिविजुअल कंट्रोलर्स से कंट्रोल किया जाता है. So in other circuits, the individual phase controllers affect the other phase loads also, and they have to be studied as complete three-phase circuits. Okay. So the individual phase controllers, they affect the other phase loads also. Okay. So that's why they have to be studied as complete three-phase circuits. The peak voltage occur across thyristors at or near the fully off state. Okay. And in case of two circuits, the maximum thyristor voltage is the peak of the line voltage. Okay. Wherein in circuit B, it is the peak of the voltage, phase voltage, and in two circuits the maximum thyristor voltage will be somewhere between peak of the phase and line voltage depending on the leakage current of the thyristors. Okay. So the method of firing and the presence of voltage sharing resistors across the thyristors. So all the 5 circuits can be used under phase control. Okay. So if we compare all these 3 configurations, so let us see this 4 wire star delta star load. Okay. So in this configuration, the maximum thyristor voltage is the peak of the line voltage. Okay. तो अगर हम थायरिस्टर वोल्टेज की बात करें, जो मैक्सिमम थायरिस्टर वोल्टेज होगा, लाइन वोल्टेज का जो पीक वोल्टेज होगा वही मैक्सिमम थायरिस्टर वोल्टेज भी होगा. इन व्हिच सर्किट? इन सर्किट बी. ओके, बिकॉज इट इज कनेक्टेड इन स्टार न्यूट्रल अरेंजमेंट. And the range of phase angle required to achieve full output range from 0 to maximum varies between the circuits. Okay. So कितने रेंज का फेज एंगल चाहिए फुल आउटपुट पाने के लिए, ओके, जीरो से मैक्सिमम के लिए, ये सर्किट टू सर्किट वेरी करेगा. मतलब इट इज नॉट कांस्टेंट फॉर ऑल द सर्किट्स, इट विल वेरी. ओके. सो द मैक्सिमम करंट इन द थायरिस्टर्स इज डिसाइडेड फ्रॉम द fully on condition, and the size of the thyristors to be used should be chosen from this condition. Okay. So maximum current थायरिस्टर्स में किस बेसिस पर डिसाइड होता है? ऑन कंडीशन पे. ओके. एंड द पीक, मीन एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ थायरिस्टर करंट्स आर रिलेटेड टू द आरएमएस वैल्यू ऑफ द इनपुट करंट व्हिच शुड बी फाउंड बाय अप्लाइंग द फुल सप्लाई वोल्टेज टू द लोड सर्किट. ओके. सो जो पीक वैल्यू है, जो मीन वैल्यू है, या जो आरएमएस वैल्यू है थायरिस्टर करंट की, ओके, दे आर रिलेटेड टू द आरएमएस वैल्यू ऑफ द इनपुट करंट, एंड इट शुड बी डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग द फुल सप्लाई वोल्टेज टू द लोड सर्किट. जब आप लोड सर्किट को फुल सप्लाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तभी जा करके आप इन आरएमएस वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड द लोड इम्पीडेंस पर फेज इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड एंगल. ओके. सो इट इज टेकन एज पॉजिटिव, इट इज मोस्टली इंडक्टिव. आरएल लोड सर्किट इफ वी टॉक, so it is inductive. Okay. So the load impedance per phase is equal in magnitude and angle. Okay. So the difference between the two circuits is that in the second one the neutral point is available, making it 4 wire. Okay. So if we talk of these circuits, okay, so here neutral point is available. Okay. In the previous one neutral is not available. So the difference between the two circuits is that they are connected in delta, they can be converted into equivalent star, making it identical to the first circuit. Okay. And also the current in the thyristors in the second case are the line currents which are higher than the phase currents. So we know that in this arrangement we have the line current is higher than the phase current. Okay. So which are flowing in the thyristors. So the difference between the two circuits is that in the second one the thyristors connected back to back are in delta with the load connected in the 3 lines. Okay. And also the current in the thyristors in second case are the phase currents which are lower than the line current. Okay. Flowing in the first one. So this is the difference. Okay. And it can be concluded that the other types of circuits for the 3-phase AC regulator can be used, but either the circuits are not bidirectional, okay, unidirectional, or if they are bidirectional,
in one half only diode connected back to back per phase instead of the thyristors. Okay, so अदर टाइप्स ऑफ सर्किट्स जो हैं थ्री फेज एसी रेगुलेटर के, उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट किसी भी सर्किट को ओके बाय डायरेक्शनल नहीं है, बाय डायरेक्शनल नहीं बनाया जा सकता, वो सब यूनि डायरेक्शनल है, मतलब एक डायरेक्शन से ही ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, और अगर वो बाय डायरेक्शनल है ओके तो इन एक वन हाफ ओनली, मतलब एक ही हाफ में बाय डायरेक्शनल मोड में काम कर सकते हैं, only diode connected back to back per phase instead of thyristor. Okay, so in the second case only in one half with the thyristor per phase controlled output voltage shown is obtained, but in other one uncontrolled output voltage same as input is obtained. So in the first case where only one thyristor per phase is used, okay, so in one half controlled output voltage obtained, but in the second half output voltage is 0. Okay, so अगर आप एक फेज में एक ही थायरिस्टर का इस्तेमाल करेंगे, सो एक हाफ में तो आपको कंट्रोल आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा, बट इन सेकेंड हाफ क्या होगा, द आउटपुट वोल्टेज इज जीरो एज ओनली वन डिवाइस बट नॉट टू डिवाइसेज। ओके, सो इंस्टेड ऑफ टू थायरिस्टर्स इफ यू विल यूज ओनली वन थायरिस्टर, ओके, सो व्हाट विल हैपन देन, एक हाफ में तो आपको कंट्रोल आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा, यू कैन ऑब्टेन द कंट्रोल आउटपुट वोल्टेज डिपेंडिंग अपॉन द टेक्निक ऑफ द थायरिस्टर्स। ओके, बट इन द सेकेंड हाफ यू विल गेट जीरो वोल्टेज। ओके, लाइक अगर हम किसी भी एक फेज की बात करें, ओके, सो दिस फेज में अगर दो थायरिस्टर्स की जगह एक ही थायरिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, okay, तो इन दैट केस व्हाट विल बी हैपन कि एक हाफ में तो आपको वन हाफ साइकिल यू विल ऑपरेट विद दिस थायरिस्टर, बट इन अनदर हाफ साइकिल देयर इज नो अदर थायरिस्टर, सो द आउटपुट वोल्टेज व्हिच यू विल गेट विल बी जीरो। ओके,